Hello students, let's start the study of Sanskrit. Lesson 3 Atma Shraddhayaha Prabhavaha. In the previous video, I explained this lesson with its translation, right? And also I have discussed all the difficult words from the lesson, and I gave you to write all the difficult words, right? With their meanings. Now today we are going to discuss about the exercises of this lesson. Now Swadhyayah exercises. First exercise is pronounce the words orally. ये जो words दिए गए हैं ये हमको orally pronounce करने हैं, right? First of all I will read the word and then you have to repeat it. Okay? First word is एकलव्यः. एकलव्यः मीन्स एकलव्य. धनुर्विद्याम्. धनुर्विद्याम्. धनुर्विद्याम् मीन्स knowledge of archery. द्रोणाचार्यस्य मीन्स द्रोणाचार्य. अगच्छत्. अगच्छत् मीन्स went. Past form of gacchati. Svikuru means accept. Svikuru means accept. Pratyavadat. Pratyavadat means replied. Pratyavadat means replied. Shishyarupen. Shishyarupen means as a student. Paryantam. Paryantam means till. Utthapayati. Utthapayati. Utthapayati means picked, उठाया. Guru Shraddhayaha. Guru Shraddhayaha. Faith in the Guru. Guru Shraddhayaha. Faith in the teacher. And Durlabha. Durlabha means difficult to get. Durlabha means difficult to get. Okay, let's see the next exercise. Now question 2, exercise 2, answer the questions in Sanskrit. Now here I have written only the answers. Question I will read from the textbook. So open your textbook, page number 12. Question 2. The first question is एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुं कस्य समीपम् अगच्छत्. एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के लिए किसके पास गया? एकलव्यः, द आंसर इज एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुं द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत्. एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुं द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत्. एकलव्य किसके पास गया? द्रोणाचार्य के, गुरु द्रोण के पास गया धनुर्विद्या सीखने के लिए. आपको क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक में से लिखना है और आंसर यहाँ से. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन. एकलव्य द्रोणम किम अवदत्. एकलव्य ने गुरु द्रोण को क्या कहा? एकलव्य द्रोणम अवदत्, गुरुदेव अहम अपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि. एकलव्य ने गुरु द्रोण को क्या कहा? कि गुरुदेव मैं भी धनुर्धर बनना चाहता हूँ. राइट, कृपया माम स्वीकुरु. सो काइंडली एक्सेप्ट मी, मेरा स्वीकार कीजिए एज अ स्टूडेंट. एकलव्य द्रोणम अवदत्, गुरुदेव अहम अपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि, कृपया माम स्वीकुरु. Now let's see the third question. Question 3. द्रोणः एकलव्यं किम अवदत्. जब एकलव्य ने गुरु द्रोण को पूछा कि कहा कि मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, राइट, और फिर गुरु द्रोण ने क्या जवाब दिया? द्रोणः एकलव्यं किम अवदत्. गुरु द्रोण ने एकलव्य को क्या कहा? तो द्रोणः एकलव्यम् अवदत् अहं कौरवान् पांडवान् च पाठयामि. अहं भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि.
गुरु द्रोण ने एकलव्य को क्या कहा कि अहम कौरवान पांडवान च पाठ्यामि, मैं तो कौरव और पांडवों को पढ़ाता हूँ। अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि, मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू एज अ स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4। एकलव्यः बाणैः किम अकरोत्, एकलव्य ने अपने बाणों से क्या किया। एकलव्यः बाणैः एकस्य कुक्कुरस्य मुखम् असीव्यत्, एकलव्य ने क्या किया, अपने बाणों से एक कुक्कुरस्य मीन्स एक जो डॉग था उसका मुंह बाणों से पूरा सी दिया, उसके मुंह में बाण भर दिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5, द्रोणाचार्यः एकलव्यं किम अपृच्छत्, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को क्या पूछा। द्रोणाचार्यः एकलव्यं अपृच्छत् कः तव आचार्यः, हू इज योर टीचर। द्रोणाचार्य आस्क्ड एकलव्य हु इज योर टीचर। जब एकलव्य ने उस जो डॉग का मुंह सी दिया बाणों से, ये देखकर गुरु द्रोण ने पूछा एकलव्य को कि कौन तुम्हारे टीचर है, राइट, तुम्हें कौन पढ़ाता है। तो उसने कहा, सॉरी, द्रोणाचार्य ने पूछा कि हु इज योर टीचर, कहा तव आचार्यः। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question 3, fill in the blanks. Now in your textbook page number 13 there are blanks in question 3, right? I will read the blank and give the answer. Okay, you have to write the answer in your textbook. First blank, एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुं खाली जगह समीपम अगच्छत्, एकलव्य धनुर्विद्या पढ़ने के लिए किसके पास जाता है। देयर आर 4 ऑप्शंस, आचार्यं प्रति, शिक्षयति, अभशत् और द्रोणाचार्यस्य। द राइट आंसर इज द्रोणाचार्यस्य। एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुं द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत्, द्रोणाचार्यस्य। राइट द फर्स्ट आंसर ऑफ ब्लैंक द्रोणाचार्यस्य। सेकंड, एकलव्यस्य ब्लैंक श्रद्धा शिथिला न अभवत्, एकलव्य की जो श्रद्धा थी, राइट, उसका जो विश्वास था वो किसके प्रति नहीं थमा, राइट। तो आचार्यं प्रति, शिक्षयति, अभशत् और द्रोणाचार्यस्य। तो उसके जो एकलव्य था उसको अपने आचार्य के प्रति जो विश्वास था, राइट, वो कभी नहीं टूटा। तो द आंसर इज आचार्यं प्रति। एकलव्यस्य आचार्यं प्रति श्रद्धा शिथिला न अभवत्। थर्ड ब्लैंक, एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा ब्लैंक, एक डॉग था, एक कुत्ता था, वो उनको देखकर भौंकने लगा। व्हाट इज द राइट आंसर? अभशत्। एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभशत्। फोर्थ ब्लैंक, एकलव्यः अस्मान् ब्लैंक स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रज्ञः भवतु। एकलव्य हमें क्या सिखाता है? स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रज्ञः, बिकम योर ओन लाइट एंड डिजर्निंग इंटेलिजेंस। तो एकलव्य हमें सिखाता है। एकलव्य अस्मान् शिक्षयति, राइट आंसर इज शिक्षयति। एकलव्य अस्मान् शिक्षयति, स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रज्ञः भवतु। ओके, now you have to write these answers in your blanks, okay, in your textbook. Now next question. Now make sentence from the given words. First is धनुर्धरः। अर्जुनः महान धनुर्धरः अस्ति, अर्जुन एक महान धनुर्धर है। बालकः, बालकः निर्दोषः भवति, बालक निर्दोष होता है। यहाँ पे बालक। शिष्यः, हे शिष्य सत्यं वद धर्मं चर, हे शिष्य सच बोलो और धर्म का आचरण करो। कुक्कुरः, कुक्कुर
कुक्कुरः रात्रि समये बहु भषति। जो कुक्कुरः होता है, डॉग होता है, कुत्ता, वो रात के समय बहुत भौंकता है। नाउ नेक्स्ट इज राइट रॉन्ग। Now question 5 is true or false. First sentence is एकलव्यः ईश्वर श्रद्धायाः प्रतीकः अस्ति। एकलव्य ईश्वर श्रद्धा का प्रतीक है। Right or wrong? You have to write am for yes and no for wrong. Okay? No for false and am for true. Now एकलव्यः ईश्वर श्रद्धायाः प्रतीकः अस्ति. Is it right or wrong? Wrong. एकलव्यः आत्मश्रद्धायाः प्रतीकः अस्ति. So the first is wrong. We have to know for false, right? Second, एकलव्यः बाणैः कुक्कुरस्य मुखम् असेव्यत्। एकलव्य ने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह से दिया। That is right. So the answer is am, means true. Third, the answers you have to write in your textbook. आचार्यं प्रति एकलव्यस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्। आचार्य के प्रति एकलव्य की जो श्रद्धा थी वो कम न हुई। This is also right. True. And fourth number, द्रोणाचार्यस्य एकलव्यस्य शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोति। द्रोणाचार्य एकलव्य को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। It is also right. True. Write the answers in your textbook. Now question 6. Question 6, blanks with the correct form of root verb. हमें जो blank में जो root verb दिया गया है उसका correct form लिखना है blank में। तो the first sentence example is given here, right? सह धनुर्विद्यां blank इच्छति। पठ दिया गया है root verb पठ, and the answer is सह धनुर्विद्यां पठितुम इच्छति। तो the answer is पठितुम। हमें correct form लिखना है इस root verb का, पठ पठितुम। ऐसे ही सभी blanks हमें जो दी गई है 3 blanks, इसमें answers लिखने हैं, right? This is the example that is given in your textbook, right? And according to the example we have to write the answers from the given root verbs. Okay, first sentence is सह अध्यापकम blank इच्छति। वो अध्यापक बनना चाहता है। The root verb is भू और भव, तो भवितुम। सह अध्यापकम भवितुम इच्छति। The answer is भवितुम. Write in your textbook and write the answer in your textbook. भवितुम. Page number 14. अहम रोटिकां blank इच्छामि। मैं रोटी खाना चाहता हूँ। अहम रोटिकां खाद, the root verb is खाद, and the answer is खादितुम. The answer is खादितुम. Third is भवान उद्याने चलितुम इच्छति वा। The root verb is चल, and the answer is चलितुम. भवान उद्याने चलितुम इच्छति वा. Now all the exercises have finished of this lesson, and this lesson has totally completed. Now all the exercises as your homework. Write all exercises in your notebook. Okay, all the solved exercise in your notebook, and blanks and true false write in your textbook also. Okay, thank you.